फ्रेंड्स, क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये वीडियो पार्ट 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में हम जो पॉइंट के थे उसके बाद हमारा जो ये फ्रांस एबोलिशन मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक, लास्ट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोनार्की पॉइंट्स कंप्लीट किया था। अब उसके बाद का ये नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांस एबोलिशन मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। किस तरह फ्रांस रिपब्लिक फॉर्म हुआ। Although Louis XVI had signed the constitution and he entered into a secret negotiation with the King of Prussia, the National Assembly voted in April 1792. याद रखना ये National Assembly voted in April 1792 to declare a war against the Prussia and Austria. Thousands of volunteers are thrown from the province to join the army. So political clubs became an important rallying point for the people and who wished to discuss the government policies and plan their own form of action. The most successful of these clubs was that the Jacobin. उस टाइम की जो इनका जो ग्रुप्स था, क्लब्स थे, तो वो मोस्ट फेमस जैकोबिन क्लब्स के नाम से फेमस हुआ। Which got its name from the former convent of Saint Jacob in Paris. उनके नाम के ऊपर से जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ। The member of Jacobin club belong mainly to the less prosperous section of societies. They included small shopkeepers. उसके अंदर जो सारे लोग थे जो जैकोबिन क्लब के अंदर बहुत इतने प्रॉस्पेरियस नहीं थे, ओनली फॉर दे इंक्लूड द स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशन सच शॉपकीपर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंट मीडिया के जो लेबर्स होते वो, सो एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। द लीडर वाज अ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। The Jacobin club came to be known as the Sans-Culottes and literally meaning those without knee breeches. यानी उनका एक ड्रेस कोड फिक्स किया गया, ये जो नी के तक का जो ब्रीचेस वो लोग पहनते थे। Sans-Culottes men wore a long striped trouser similarly to those worn by dock workers in addition to the red cap and that symbolize the liberty. Women however were not allowed to do so. इस तरह इनका एक जैकोबिन क्लब के जो मेंबर का यूनिफॉर्म फिक्स किया गया। On the morning August 10, 1792, stormed the palace of the Tuileries, massacres the king, guarded and held the king himself as a hostage for several hours. States the assembly voted to imprison the royal family. Elections were held. The newly elected assembly was called the convention on 21 September 1792. यानी जो कन्वेंशन हॉल के अंदर इनका जो एक न्यूली जो असेंबली थी वो फॉर्म हुई 21 सितंबर 1792. इट अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर द फ्रांस रिपब्लिक। उन लोगों ने डिसाइड किया कि एबोलिशन ऑफ मोनार्की का एबोलिशन किया जाए और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर किया जाए। अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट where the people elected the government including the head of the government. There is a no hierarchy monarchy, यानी कोई भी हेरिडिटरी मोनार्की वो नहीं हो सकता, यानी एक रिपब्लिकन सोसाइटी फॉर्म हो जाए इन द फ्रांस। Louis XVI was sentenced to death by the court on the charge of the treason on 21 January 1793. He was executed the public at the place de la Concorde. Now
next point, reign of terror. In this point, the Robespierre rules in the France was known as the reign of terror. यानी कि रॉबिस्पायर की जो रूल्स को reign of terror का नाम दिया गया है. The period of 1793 to 1794 it refers to as the reign of terror. 1793 से लेके 94 इस पीरियड को reign of terror बोला गया है. Robespierre followed a policy of self-control and punishment all those who of the member of this in the monarchy systems. In any monarchy system, so the being enemies of the republic, for example, the ex-noble and clergy member of the political parties, even a member of own party who did not agree with his method, यानी जो उनके मेथड के साथ अग्री नहीं थे, they were arrested and imprisoned and then tried by the revolutionary tribunals. Robespierre government issued the law placing the maximum ceiling on wages एंड प्राइजेस, यानी उनके लिए वेजेस के एक सेलिंग प्राइस डिसाइड किए गए. मीट एंड ब्रेड वर राशन, यानी मीट और ब्रेड को राशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए. जो उस टाइम पे फूड क्राइसिस थी तो वो सारे सॉल्यूशन किए गए. पीजेंट्स वर फॉर्म टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटी एंड सेल इट्स मार्केट फिक्स्ड प्राइस टू द गवर्नमेंट, यानी फिक्स्ड प्राइस से मार्केट में उसको सेल किया जाएगा. सारे जो रॉबिस्पेरे ने गवर्नमेंट जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट फॉर्म करके उसके रूल्स बनाए. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन. ऑल द सिटीज वर रिक्वायर्ड टू ईट द ब्रेड एंड लोफ ऑफ made up of the whole wheat. Equality was also sought to be a practice through the forms of the speech and address. Churches were shut down and their buildings converted into the barrack or offices. यानी उनकी जो चर्चेस थे उनको एक ऑफिसेस के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया. Finally, he convinced by the court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. Now, next point, the directory rules in France. The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle class to seize the powers. यानी जैकोबिन क्लब गवर्नमेंट के अंडर में यानी जो वेल्थियर मिडिल क्लास उस टाइम पे उनको सारे पावर्स और सब कुछ दिए गए थे. दैट मीन द वेल्थियर मिडिल क्लासेस. अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, यानी कि जो लोग जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उनको भी वोटिंग राइट्स दिए गए. The political instability of the directly paved the way for the rise of military dictator and Napoleon Bonaparte. Now, next point. Did women have a revolution? यानी विमेन ने भी इन रेवोल्यूशन के अंदर पार्ट लिया था. यस, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट सच एज brought about so many important changes in the French societies. That means the women also participate in this revolution. Condition of the women during the French Revolution. तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में वीमेन की क्या कंडीशंस थी? The women hoped that the improvement and would pressurize the revolutionary government to introduce a measure to improve their lives. Women भी चाहती थी कि उनका भी improvement हो. Most of the third estate had to work
for a living. The work as a cemeterist or the lenders and sold flowers, fruits and vegetables at the market. ये सारी चीज भी विमेन्स अलाउ करती थी उस टाइम पे. ऑल्सो लॉन्ड्रीज के अंदर भी विमेन काम करती थी. Next, they were employed as a domestic servant in the houses of a prosperous people. यानी जो prosperous people थे उनके वहाँ भी women as a servant household work करती थी. Most women did not have access to education or job training. Only the daughters of the nobles or the wealthier member of the third estate could study at the convent. वहाँ पे उस टाइम पे जो नॉर्मल जो वीमेन थे उन लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जाता था, ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी. बट जो उनकी डॉटर्स और वगैरह थी, जो वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट थे, वो लोग ही उस टाइम पे एजुकेट करते थे. वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज. एग्जाम्पल, कुक, fetch water, quick ups for the bread and look after the children. Their wages were lower than those of man. यानी उस टाइम पे वीमेन को मैन से कंपेयर टू कम वेजेस दिया जाता था. So in order to discuss the ways their interest, women started their own political clubs and newspapers. इस तरह women ने भी अपना एक political जो उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए, एक क्लब्स बनाए और also they introduced a newspaper. Women of France demanded the right to vote to elected to in the assembly and hold the political officers. Also इसमें assembly के अंदर पार्ट लेने के लिए उन्होंने भी डिमांड की. Also law introduced by revolutionary government to improve the life of women in France. So all together with the creation of the state, schooling was made compulsory for all girls. तो बहुत सारे चेंजेस आए ये विमेन जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें, यानी गर्ल चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन कंपलसरी किया गया. Their fathers could no longer force them into the marriage against their will. यानी कि उनके डॉटर के परमिशन के बिना कोई भी फादर पेरेंट्स उसको यानी फोर्स मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर सकता. मैरिज वॉज मेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनेक्टेड इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर द सिविल लॉज. यानी मैरिज भी उस टाइम पे एज अ कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म पे, यानी कि गवर्नमेंट की लॉ कोर्ट मैरिज जैसे बोलते हैं, इस तरह सारे उसके रजिस्ट्रेशन होते और एज अ सिविल लॉज. Divorce was made illegal and could be applied for both the women and men. Women could now train for jobs, could become artists to run small business. यानी women को भी ट्रेनिंग दी जाती थी छोटे छोटे बिजनेस चलाने के लिए, आर्टिशन के लिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी. So some changes in this period. Now next point, abolition of slavery. One of the most revolution society reforms, the Jacobin regimes, was the abolition of slavery. Into a French colonies, a triangular slave trade began in the 17th century between the Europe, Africa and America. इनके बीच ट्रेड स्टार्ट हो गया. The exploitation of slave laborers made it possible to meet the growing demands in the European and make for the sugar, coffee, indigo plantation, port cities like Border and Nantes owned their economic prosperity to the flourishing slave trade.
इस तरह लेबर की जो डिमांड थी उस टाइम पे, तो अलग अलग वो जो ट्रायंगुलर स्लेव था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में, वहाँ जो लेबर्स के पास जैसे शुगर कल्टीवेशन के लिए, शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए, कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो प्लांटेशन के लिए, ये सारे बहुत सारे लेबर्स की डिमांड रहती थी. So slavery was a finally abolition in the French colony in 1848. So finally slavery जो सिस्टम थी उसका abolition हुआ in 1848 in the French colonies. Now next point. Now the revolution and everyday life. The year following 1789 in the France show many changes in the daily life of the man, women and children. बहुत सारे changes आए. The revolution government took it upon themselves to pass a law that would translate the ideal of liberty, equality into every practices. On the important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer 1789 was the abolition of censorship. Now effect of abolition of censorship. हमारा next point है effect of abolition of censorship. Now a declaration of the right of man and citizen proclaim the freedom of speech and expression to be natural right. यानी हर एक ह्यूमन राइट्स दिए गए, हर एक सिटीजन को उसके राइट्स डिसाइड किए गए, यानी कि जो भी है उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और द नेचुरल राइट्स हर एक पीपल को, सिटीजन को मिले. ये सेंसरशिप में ऐड किया गया है. सो न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंट, पिक्चर्स flooded the town of the France from where they traveled rapidly into the countryside. इस तरह इसे प्रिंट मीडिया के थ्रू हर जगह ये फेमस हो गया, पब्लिश हो गया. एंड these all describe and discuss the event and changes taking a place in France. Freedom of press also mean that the opposing the view of the event could be expressed. यानी जिस और उसके अपोजिटर को भी उसके सामने एक्सप्रेस किया जाए. प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस attracted large number of the peoples. बहुत सारे उसके ऊपर प्लेस बनाए गए, बहुत सॉन्ग्स भी बनाए गए, बहुत सारे फेस्टिवल प्रोसेशन भी उसके यहाँ लिए इश्यू किए गए. In 1804 the Napoleon Bonaparte crowned himself as emperor of France. इसलिए 1804 में आपको मालूम है नेपोलियन बोनापार्टे को उसके लिए ताज पहनाया गया जो उस टाइम पे फ्रांस का एम्परर था. नेपोलियन शो हिम अ रोल एज द मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ. आल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड कोड ऑफ कंडक्ट बुक. The protection of the private properties and uniform system, weight and measures provided by the decimal system, etc. introduced in this period of Napoleon Bonaparte. Napoleon was finally defeated at Waterloo in 1815, and the idea of liberty and democratic right were most important legacy of the French Revolution. The idea spread from the France to the rest of the Europe during the 19th century, and where the feudal system were abolished. हमारा ये लास्ट पॉइंट, टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय are the two example of individual who responded to the idea coming from the revolutionary in France. हमारे इंडिया के अंदर ये जिस तरह टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने जिस तरह आइडिया दी, इस तरह फ्रांस में जो नेपोलियन बोनापार्टे थे उसका भी इसी तरह उस वहाँ का उसने लॉ बनाए और वहाँ पे रूलिंग एस्टेब्लिश किया. अभी ये हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. हमारे सारे पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो गए. ओके,
Bye friends, subscribe my channel and share more to learn. Okay, bye friends.